Hello students, welcome to my channel Hans Commerce Tutorial for the lectures on commerce, accounts, finance and management. My suggestion to you, before watching the video, please go to the description below my video. You'll find a link there. Take a printout of the problems given in the link and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution and the explanation to get the maximum benefit from the lectures. Thank you. Come on students, now we'll start the problems on making the frequency distribution table. See here, previous video we have discussed about the introduction to statistics. In that video we have discussed about the meaning of the term statistics, its history, development, then what are the definitions of statistics. We have discussed about the scope, functions, nature of statistics, importance of statistics, limitations, distrust, all these things we have discussed in the previous video. So if you have not watched the previous video, please go back to the previous video and watch the complete introduction. Now, the meaning of the term statistics is collection, analysis, interpretation of the numerical data in order to arrive at some prudent decision. So in order to attain the functions of these statistics, the first step is collection of data. After collecting the data should be properly presented by grouping. Without analysis, without this grouping or classification, we cannot go to the next step of analysis and interpretation. So analysis of data requires that the data should be properly grouped. That is called classification of data. So in this video, we are going to discuss about the methods of how to classify the data, how to make the frequency distribution table, what is exclusive method, what is inclusive method, and how to make the frequency distribution table in continuous frequency and discrete frequency table. Now, hope you got the printout of all the problems from the link. Again and again I am saying, in order to get the complete command on the subject, you must have a printout beforehand while watching the video. So please, if you are sincere in getting the knowledge, go to the link, get a copy of that printout, copy of that problems, and keep it ready while watching the video. Now I am starting the problem, hoping that everybody is having the problems. I am reading out the first problem. In a survey of 30 families in a village, the number of children per family was recorded and the following data obtained. So we represent the data in the form of a discrete frequency distribution. See here, we are finding out the number of children in each family. In a village, 30 families are there. We want to collect the data regarding how many children are there in each family. So naturally it will be a discrete series because we will have only integers. We don't have fractional children. Children will be in whole number. So we have counted in each family. For example, first family 6 children, second family 5 children, third family 2 children, fourth family 8 children. So we have recorded the data. We have collected the data. Now our job is to present this data in a table, frequency distribution table, discrete frequency distribution table. First column will take number of children. So if you observe the data, the minimum number of children, 0. We don't have negative children. 0 is the minimum number. And maximum number of children, if you see here, the maximum number is 8. So minimum 0, maximum 8. So our values will go from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now see carefully the presentation of this data. Discrete frequency distribution table. First column I have taken number of children 0, 1, 2, 3, maximum 8. Second column tally bars. In order to make correct classification, we want to know what is the frequency of each variable. For each variable, what is the frequency? Example, 0 occurs how many times? How many families have 0 children? No children. Then second, how many families are there in which there is only 1 child? How many families are there in which 2 children, 3 children? We want to count. So what is the better method? See here.
प्रॉब्लम में जो नंबर्स दिया है वो नंबर्स लेकर हम देखेंगे वो नंबर कौन से डिस्क्रीट वेरिएबल को अटैच होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू इट इज गिवन 6, फर्स्ट वैल्यू इज गिवन इन द प्रॉब्लम 6, तो अगेंस्ट 6 यू जस्ट पुट ए बार, एक बार स्लैश डालिए, एक स्लैश डाल दीजिए, बार डाल दीजिए अगेंस्ट 6, वन नंबर हो गया। सेकंड, आफ्टर 6 इट इज 5, आफ्टर 6 इट इज 5, तो अगेंस्ट 5 पुट ए बार, एक बार स्लैश डालकर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट नंबर इज 2, अगेंस्ट 2 पुट ए स्लैश, देन आफ्टर 2 इट इज 8, अगेंस्ट 8 पुट ए स्लैश। ऐसा नंबर्स जो दिया हुआ है लाइन से रो में चले जाइए, एक एक नंबर देखिए वो नंबर कौन से वैल्यू के अगेंस्ट में आएगा, वो वैल्यू के अगेंस्ट में एक स्लैश डाल देंगे। इस तरह यू हैव टू टेक ऑल द वैल्यूज, जितने वैल्यूज प्रॉब्लम में दिया सारे वैल्यूज को लेकर एक एक स्लैश डालेंगे। तो किस तरह डालेंगे, पहले 4 स्लैशेस डालेंगे, 1 2 3 4। अब फिफ्थ स्लैश वर्टिकल नहीं लेंगे बल्कि हॉरिजॉन्टल लेंगे, कट करेंगे उसको। अब जैसा फॉर एग्जांपल फोर्थ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 के लिए 1 बार डाल दिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और एक बार 4 आ गया, तो फिफ्थ वर्टिकल बार नहीं डालेंगे बल्कि फिफ्थ को हॉरिजॉन्टल से कट कर देंगे। ये फिफ्थ बार है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कट करे हुए हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन फिफ्थ लाइन है। तो 4 वर्टिकल लाइंस एंड फिफ्थ इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन। Like this you have to make all the tally bars, you have to make all the tally bars। तो 0 only 1 tally bar। पूरा जो डाटा दिया है 30 फैमिलीज का जो डाटा दिया है, ओनली 1 फैमिली वी हैव 0 चाइल्ड, 0 चिल्ड्रन, नो चिल्ड्रन एट ऑल, सो 1 बार। 1 नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1, तो पूरे डाटा में रेफर करें तो ओनली वंस वी गॉट 1 नंबर वी गॉट ओनली वंस, एक ही बार आया। लेकिन 2 चिल्ड्रन जो बार बार रिपीट हुआ, 5 टाइम्स इट रिपीटेड, 5 टाइम्स 2 रिपीटेड इन द डाटा गिवन, तो वी हैव रिटन 5। तो 4 वर्टिकल बार्स एंड 1 हॉरिजॉन्टल बार, टोटल 5। उसी तरह 3 चिल्ड्रन 1 2 3 4 5 एंड 6, पहले 4 वर्टिकल बार, एक हॉरिजॉन्टल बार, 5 बार हो गए, प्लस 1 6। उसी तरह 4 चिल्ड्रन 1 2 3 4 5। फिफ्थ 5 चिल्ड्रन 1 2 3 4, 6 चिल्ड्रन 1 2 3, 7 चिल्ड्रन 1 2 3, 8 चिल्ड्रन 1 2। 2 families are having 8 children out of a total of 30। अब यहां पर बार्स ड्रॉ करने में अगर इफ यू हैव कमिटेड द मिस्टेक, दैट मिस्टेक विल बी कॉट इन द टोटल। अगर यहां बार्स ड्रॉ करने में कहीं पर अगर मिस्टेक कर दिया, जैसा कि यहां पर 5 लेना था, बाय मिस्टेक 4 ले लिए, अब जब फ्रीक्वेंसी टोटल करेंगे तो यू विल नॉट गेट 30। प्रॉब्लम में दे दिया कि 30 फैमिलीज है, आप यहां पर मिस्टेक कर दिया जिसकी वजह से यहां पर 29 फैमिलीज आ रहे हैं, 29 families, that means your counting is wrong, your presentation is wrong, somewhere you have committed the mistake। if you get the total of frequency 30 and also problem में भी 30 values दे दिया है, that shows that your calculations are accurate, there is no mistake at all। This is called discrete probability distribution, right? First problem we have completed। Now see the second problem। The class of 2004 of Osmania University had 30 students who scored the following letter grades: A, B, D, C, C, B, D. Represent the data in the form of a discrete frequency distribution। Just like the previous problem, here also we have to make the discrete frequency distribution। How many students has been taken? 30 students of Osmania University has been taken। Examination was conducted and grades were allotted। Marks are not given, marks नहीं दिए बल्कि grades दिए। Grades क्या है? A, B, C, D। Every student got any one of the grade, A grade or B grade or C grade or D grade। हर student को grade आया, right? So we will take the first variable as grades। Discrete frequency distribution table, first column will take the grades A, B, C, D। Then tally bars, then frequency। काउंट करेंगे टैली बार्स कितने हैं, यहां पर फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, राइट? नाउ वी हैव टू गो बाय द
ग्रेड्स गिवन इन द प्रॉब्लम। अब पहला ग्रेड जो दिया ए दिया, फर्स्ट ग्रेड गिवन इन द प्रॉब्लम इज ए, तो ए के अगेंस्ट में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्लैश ड्रॉ कर देंगे, 1 बार यू हैव टू ड्रॉ अगेंस्ट ए, फर्स्ट हो गया। सेकंड उसके बाद बी दिया, सेकंड ग्रेड जो दिया बी, तो बी के अगेंस्ट में 1 बार। देन थर्ड जो दिया है डी, तो डी के अगेंस्ट में 1 बार। फिर नेक्स्ट जो दिया है सी, अगेन सी के अगेंस्ट में 1 बार। फिर उसके बाद अगेन सी, तो और एक बार सी में सेकंड बार डाल दिए, पहले एक बार आ गया था और एक बार डाल दिए। देन उसके बाद बी के बाजू और एक बार। इस तरह सीरियल से देख लेते जाइए, लाइन से देख लेते जाइए, एक एक अल्फाबेट, एक एक ग्रेड जो आ रहा उसके अगेंस्ट में एक बार, राइट। एज यूजुअल 4 बार्स डालेंगे और 5th बार कट कर देंगे, 5th बार कट कर देंगे। इस तरह पूरे जो ग्रेड्स दिया 30 ग्रेड्स आर गिवन, सो वी हैव ड्रॉन 30 बार्स, पूरे 30 बार्स आ गए। अब काउंट करेंगे, ए ग्रेड हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट 1 2 3 4, बी ग्रेड हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट 5 plus 5 10 plus 1 11, C grade 5 plus 4 9, D grade 5 plus 1 6. Now find out the total. If you get the total 30, that means your presentation, your table is correct. If you commit the mistake while taking these bars, then definitely you will not get 30. That's all. Exactly similar to the previous problem. So 2 problems we have discussed on discrete series. Hope you understood. It's very easy. It's the ABC of statistics. Statistics का ABC है। पहला काम कलेक्शन करना है, डाटा कलेक्ट करना है, डाटा कलेक्ट हो गया, अब उसको प्रेजेंटेशन देना है, टेबल में ड्रॉ करना है। तो इस तरह सिस्टमैटिकली वी हैव टू ड्रॉ। देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। प्रॉब्लम में जो दिया है वो रॉ डाटा है, विदाउट एनी ग्रुपिंग, खाली लिख दिए ए बी सी डी सी ए बी, लाइक दैट वी कैन नॉट बी एबल टू कंक्लूड कितने स्टूडेंट्स को ए ग्रेड आया, कितने स्टूडेंट्स को बी ग्रेड आया, हम बोल ही नहीं सकते। हाँ, उसी डाटा को अगर हम प्रेजेंट करेंगे टेबल में, नाउ वी आर इन ए पोजीशन टू से समथिंग। व्हाट समथिंग वी कैन से, ए ग्रेड आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स गॉट ए ग्रेड, दैट मेक्स सम सेंस। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स 11 स्टूडेंट्स गॉट बी ग्रेड, out of 30 students 9 students got C grade, and out of 30 students 6 students got D grade. So it makes some sense, some conclusion can be drawn by making this table. Now see the third problem. Following are the marks secured by 60 students. Arrange the data in a frequency table by exclusive method. अब देखिए 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे दिया, जैसा प्रीवियस प्रॉब्लम में 30 स्टूडेंट्स के ग्रेड दिया था, यहां पर 60 स्टूडेंट्स है पूरी क्लास में, और वो 60 स्टूडेंट में एवरी स्टूडेंट को कितने कितने मार्क्स आए यहां पर रिकॉर्ड कर दिए। नाउ इट इज आस्किंग यू टू मेक ए क्लासिफिकेशन टेबल, एक्सक्लूसिव मेथड, दैट मीन्स वी हैव टू मेक ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब उसमें क्या कह रहा है, 60 स्टूडेंट है, फर्स्ट यू चेक व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स, सब में कम से कम मार्क्स कितने हैं। यहां पर ऑब्जर्व करिए जो डाटा 60 स्टूडेंट्स का दिया 0, मिनिमम मार्क्स 0 है, लेस देन 0 नहीं है, नेगेटिव कोई मार्क्स नहीं है, 0 इज द मिनिमम। तो हम शुरू करेंगे 0 से। मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू इन द डाटा गिवन इज 84, द हाईएस्ट वैल्यू इज 84. So conveniently we can group the data. Totally 60 students है, तो उसको grouping कैसा करेंगे, 0 to 10. How many students got the marks between 0 to 10? How many students got the marks between 10 to 20? How many students got the marks between 20 to 30? So we can conveniently make the class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, like that. Now see, the lowest marks are 7. No, lowest marks are 0, and the highest marks are 84. 0, it is not 7, it is 0. The lowest marks are 0 and the highest marks are 84. So we can take the class interval as 0 to 10, 10 to 20, like that. Last class interval 80 to 90. We'll go up to 80 to 90.
because the highest frequency, highest marks are 84. So 84 will lie between 80 and 90. Continuous frequency distribution table, exclusive method. In the next problem, I'll explain you what is inclusive, what is exclusive. Exclusive method. So class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Last में 80 to 90. ये class interval ले लिया. Now tally bars as usual. Last 2-3 problems में जैसा tally bars करें अभी भी वैसे करेंगे. अब problem में देखिए जो डाटा दिया है, first student के marks 56. The first student's marks are 56. Now see in which class interval 56 will fall. In which class interval 56 will fall? So 50 to 60. 56 is between 50 to 60. तो ये 50 to 60 के लाइन में एक बार ड्रॉ कर देंगे. ये कौन सा हो गया? फर्स्ट 56 हो गया. उसके बाद दिया 71. Now see 71 will fall between 70 to 80. 70 to 80 के बीच में 71 है, तो यहां पर एक बार डाल दिया. फिर उसके बाद नेक्स्ट 18. 18 will fall between 10 to 20. 18 will fall between 10 to 20. Put a bar. Then after 18, 31. 31 will fall between 30 to 40. Put a bar. Like this. Problem में देखिए एक एक वैल्यू लाइन से. Don't take haphazard manner. Don't go unsystematic way. कभी यहां से एक ले लिए नंबर, कभी वहां से एक ले लिए, तो you will not get the correct table. टेबल करेक्ट आने के लिए एक ही लाइन में देखते जाइए, वन बाय वन. कोई अगर स्किप कर दिया, कोई छूट गया, तो फिर टैली नहीं होता, लास्ट में 60 नहीं आते. इसलिए लाइन से वन बाय वन यू सी. देन पुट ए बार्स. 4 बार्स डालेंगे, 5th बार कट कर देंगे, लाइक दैट. सो नाउ आफ्टर मेकिंग ऑल दीज बार्स, नाउ वी काउंट हाउ मेनी बार्स आर देयर इन ईच क्लास इंटरवल. फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 to 10, 4 बार्स आर देयर. Second class interval 10 to 20, 5 bars are there. Third class interval 20 to 30, 4 bars. 30 to 40, 5 plus 4, 9 bars. 5 plus 4, 9. 5 plus 3, 8. 5 plus 5, 10. 4. Then 5 plus 2, 7. Take the total, you are getting 60. That means your calculations are correct. This is the presentation. Now I'll make you one point clear. It is given exclusive method. The exclusive method is that method in which we include the lower limit and exclude the upper limit. हर क्लास इंटरवल के 2 लिमिट रहती है, एक लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट. पहला क्लास इंटरवल 0 to 10 है, 0 लोअर लिमिट, 10 अपर लिमिट. Next 10 to 20, 10 is the lower limit, 20 is the upper limit. 20 is the lower limit, 30 is the upper limit. पहला नंबर लोअर लिमिट, दूसरा नंबर अपर लिमिट. एक्सक्लूसिव मेथड में वी इंक्लूड द लोअर लिमिट बट एक्सक्लूड द अपर लिमिट. इसीलिए एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम एक्सक्लूसिव है. अब फॉर एग्जांपल 0 to 10 है, तो 0 to 10 में 0 को इंक्लूड करेंगे, 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे. याद रखिए, दिस पॉइंट यू रिमेंबर. 10 अगर नंबर वहां पर आया, 10 मार्क्स अगर आ गए, तो डोंट टेक 10 in 0 to 10. 10 यहां पर नहीं आता, 10 नेक्स्ट क्लास में जाता. तो नेक्स्ट क्लास क्या है? 10 to 20 है. तो इन दिस क्लास इंक्लूड 10 बट एक्सक्लूड 20. डोंट टेक 20 हियर, 20 विल बी टेकन हियर. तो 20 to 30 में 20 अगर आया तो लेंगे, 30 नहीं लेंगे, 30 नेक्स्ट क्लास में आएगा. दैट पॉइंट यू रिमेंबर. आई एम स्ट्रेसिंग नाउ. Include the lower limit and exclude the upper limit. That's why it is called exclusive series. That's all. This is the problem number 3. Now see the problem number 4. From the following observations, prepare a frequency distribution table in ascending order. Ascending का मतलब increasing order. Starting with 100 to 110, exclusive method. Previous problem we have decided what should be the class interval, but in this specifically it is given you have to start from 100 to 110, then 110 to 120, 120 to 130, like that we have to go. So up to what class interval we have to go? See what is the highest value. The highest value in this given is 165. सब में बड़ा वैल्यू प्रॉब्लम में जो दिया 165 है, तो 160 to 170.
तो हम कहां तक जाएंगे? 160 to 170. That's it. Now see here. Continuous frequency distribution table, class interval 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140, last में 160 to 170, because highest figure is 164. Now tally bars. अब as usual प्रॉब्लम में देखिए फर्स्ट वैल्यू कहां पर आ रहा है? द फर्स्ट वैल्यू गिवन इन द प्रॉब्लम इज 125. 125 will fall between 120 to 130. ये दोनों के बीच में 125 आएगा. Put a bar here. तो after 125 the next value is 108. 108 will fall between 100 to 110. 108 एक बार आ गई. फिर 112, 112. It will fall between 110 to 120. 120 यहां पर एक बार आती है. इस तरह पूरे बार्स डाल दें. काउंट कर लिया 1, 4, 5, 10, 6, 3, 1. Take the total 30. Here again it is exclusive series. Exclusive series प्रॉब्लम में खुद दे दिया कि you have to make exclusive series. अब exclusive series में लोअर लिमिट 100 को मिलाएंगे, अपर लिमिट 110 को नहीं मिलाएंगे. In this class interval of 100 to 110, we include 100, but we should not include 110. The 110 will be included in the next class. So 110 to 120, include 110, but don't include 120. 120 will be taken here. That is called exclusive series. Now, see the fifth problem. Convert the following class intervals from the inclusive form to exclusive form. Class intervals are given 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59. There are two types of classification. Inclusive type, exclusive type. अभी जो दो प्रॉब्लम्स आप करें 0 to 10, 10 to 20, 100 to 110, 110 to 120, ये सब exclusive type है. Because we are excluding the upper limit. लेकिन inclusive type क्या होता है? 0 to 9. 10 to 19. पहला क्लास इंटरवल 0 to 9 दिया. फिर दूसरा क्लास इंटरवल 9 से शुरू नहीं हो रहा, 10 से शुरू हो रहा, 10 to 19. नेक्स्ट 20 to 29, 30 to 39. तो यह सीरीज को इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं बिकॉज वी आर इंक्लूडिंग द लोअर लिमिट एज वेल एज द अपर लिमिट. तो करंट प्रॉब्लम इट इज आस्किंग यू टू convert the inclusive type series into exclusive type. तो कैसा convert करेंगे? यहाँ पर मैं explanation दिया. Converting the inclusive form to exclusive form of frequency distribution. In the problem it is given 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 like that. Take upper limit of the current class plus lower limit of the next class divided by 2. अब देखिए 0 to 9. What is the upper limit here? 9. What is the lower limit of the next class? 10. तो upper limit of the current class and lower limit of the next class दोनों को ऐड कर. 9 plus 10 divided by 2. 9 plus 10 divided by 2 क्या हो जाएगा? 9.5. 9.5. तो first class will go to 0.5 to 9.5. अब next 9.5 to 19.5. How we get 19.5? 19 plus 20 divided by 2. 19 plus 20 divided by 2. You will get 19.5. So the class interval will be as follows. 0.5 to 9.5, 9.5 to 19.5, 19.5 to 29. पहले जो प्रॉब्लम में दिया इंक्लूसिव टाइप में 0 to 9, 10 to 19. ये इंक्लूसिव है और उसी को हम कन्वर्ट कर दिए हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में. We have converted into exclusive series. So it will be 0.5 to 9.5, 9.5 to 19.5 to 29. That's all. Now next, sixth problem. From the following, from a frequency distribution from the following data by inclusive method, taking 4 as the magnitude of class interval. Width जो लेना है 4 का प्रॉब्लम में खुद स्पेसिफिकली दे दिया है. The width of the class interval should be taken as 4 and the class interval should be inclusive type. Problem में दे दिया है कि inclusive type बनाना है. तो we can see what is the lowest value. The lowest value in the given data is 10. सब में छोटा वैल्यू 10 है और सब में बड़ा वैल्यू 38. Highest value 38. Lowest value 10. We have to take a width of 4.
given in the problem, and we have to make inclusive type. तो पहला क्लास इंटरवल क्या होगा? बिकॉज मिनिमम वैल्यू इज 10, वी डोंट हैव एनी वैल्यू बिलो 10, 10 से कम कुछ भी नहीं है, तो 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 4 हो गए, पहला क्लास इंटरवल हो गया. तो 10 to 13, 10 to 13 इज द फर्स्ट क्लास इंटरवल. अब 14 से शुरू करेंगे, 14, 15, 16, 17. तो 14 to 17 नेक्स्ट क्लास. फिर 18, 19, 20, 21, 4 हो गए. तो 18, 19, 20, 21, 18 to 21, like that we have to go, right? Inclusive type. Frequency distribution table, inclusive type. The class interval width is 4 given. Smallest value is 10. The class interval will be 10 to 13. 4 वैल्यूज हो गए. देखिए, क्योंकि इंक्लूसिव टाइप है, इसमें लोअर लिमिट को भी इंक्लूड करना, अपर लिमिट को भी इंक्लूड करना. तो वैल्यूज विल बी 10, 11, 12, 13. अब 13 के बाद नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे 14 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इंक्लूसिव टाइप है. 14, 15, 16, 17 हो गया. अब 18 से शुरू करेंगे, 18, 19, 20, 21 एटसेट्रा. अब क्लास इंटरवल देखिए, 10 to 13, 14 to 17, 17 to 21, 22 to 25, 26 to 29, 30 to 33, 34 to 37, 38 to 41. I am going up to 41 because the highest value in the given problem is 38. सब में बड़ा वैल्यू 38 है, तो 38 to 41, 41 पे रुक गया. कोई 40 वैल्यू हाईएस्ट नहीं है प्रॉब्लम में. There is no value of 40. तो 38 to 41 last. अब as usual, see the problem and take the data. The first value given is 10. पहला वैल्यू 10 दिया है, तो 10 to 13 के लाइन में एक बार ड्रॉ कर देंगे, एक बार ड्रॉ कर. देन उसके बाद 17 विल फॉल इन सेकंड. 14 to 17, यहां पर 18 to 21, आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक हियर. 18 to 21, तो 17 विल फॉल इन द सेकंड. 14 to 17 में 17 आ गया. नेक्स्ट 15 विल फॉल बिटवीन 14 and 17, इसके बीच में 15 आएगा, सेकंड बार होती. 15 के बाद 22, तो 22 to 25 यहां पर आएगा 22. लाइक दिस यू पुट ऑल द बार्स रिप्रेजेंटिंग वन वैल्यू. हर वैल्यू का एक एक बार कौन सी क्लास में आएगा उसके अगेंस्ट में एक बार. 4 वर्टिकल बार एंड 5th वन हॉरिजॉन्टल बार. ये पूरे बार्स डालने के बाद काउंट करेंगे 5 बार्स. 5 plus 4 9, 5 plus 2 7, 5 plus 2 7, 5, 4, 2, 1. टेक द टोटल 40. अब ये 40 आने के बाद कंफर्म करना है, तो यू गो बैक टू द प्रॉब्लम एंड सी ऑल द वैल्यूज. ऑल द वैल्यूज आर 40 or not. If it is 40, then your calculations are correct, your presentation is correct. If it is not for 40, then you have committed the mistake while making the bars. That's it. So we have completed problem number 6. Hope you understood. I have explained you to the best of my ability regarding how to make the classification, right? These are the basic things of statistics. क्योंकि अभी मैं बताया कि स्टैटिस्टिक्स में डाटा कलेक्शन करना, फिर उसको क्लासिफाई करना. जब तक के सही क्लासिफाई नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं जा सकते. वी कैन नॉट मेक एनी एनालिसिस, वी कैन नॉट अप्लाई एनी एनालिटिकल मेथड of statistics. So this is the ABC of statistics.